गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइजोजोम। तो प्रीवियस क्लास रे मु ऑलरेडी जहाँ भी कंप्लीट कर सारी बीएससी सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 2 रो सॉरी कोर पेपर 3 रो में 2टा चैप्टर एवं कोर पेपर 4 रो आज यही लाइजोजोम कंप्लीट है आमर यूनिट 2 भी कंप्लीट हो। तो दुईटा चैप्टर आमर कंप्लीट हो गलानी। मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी तुम्हें देखीदेव सेठू। तो जेहेतु बहुत शीघ्र तुम सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम हम ताले दिन को आम 2टा 3टा करी क्लास कंप्लीट करवा। तो जो मैंने भी आज मो चैनल नुआ अच्छो मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। तो सबुठ प्रथम आम देखा लाइजोजोम आम तार प्रथम इंट्रोडक्शन देखा। तो लाइजोजोम आर द सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल आज वेल एज कौन प्रोटोजोआ बट दे आर आबसेंट इन बैक्टेरिया कहीं ये बैक्टेरिया कौन थाए पेरीप्लाज्माटिक स्पेस से थाए कौन लाइजोजोम बदल आई पेरीप्लाज्माटिक स्पेस कौटी थाए जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ सेल वाल मझीरे थाए और जार कि रोल होची संपूर्ण भाव में लाइजोजोम सहित सामान। तेणु एम लाइजोजोम जगार पेरीप्लाज्माटिक थाए है। तापर देख यहाँ को इंट्रोड्यूस करते किए डे ड्यू 1949 रे है यूजिंग सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक है एवं यही टेक्निक व्यवहार करना से प्रथमे एको कौन थे इंट्रोड्यूस करते। तो आइसोलेटेड कौन होते अच्छा ये टी तुम देख स्क्रीन मो किसी गोटे प्रोब्लेम अच्छी जो कि मो साउंडटा कमी जाऊँगी है साउंडटा कमी ऑटोमेटिक कमी जाए तो मो सिस्टम मो मोबाइल किसी गोटे प्रोब्लेम थी है तो देखीदेवा साउंड रेकर्ड ठीक हो कि नहीं देखीदेवा जब प्रोब्लेम होता आज तो ये क्लासटा को रेकर्डटा को मु अपलोड करवा मुस्किल हो भी क्लास सरू मु थोड़े चेक करदेवी है। तापर देखो आइसोलेटेड ए क्लास ऑफ पार्टिकल्स व्हिच वेर फाउंड to have a high content of acidic phosphatase and the hydrolytic enzyme. Because of these hydrolytic properties, these particles were called the lysosome. कहीं ना lysis माने कौन dissolution और सोमा माने होची कौन जोड़ा होची हमर बॉडी है। तापर नेक्स्ट आमे देखिबा देखो तो देखो लाइजोजोम आर कौन अच्छी लाइजोजोम आर द एनिमल सेल डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल एंड इट मेन फंक्शन इज इंट्रासेलुलर एंड एक्सट्रासेलुलर डाइजेशन। दीज ऑर्गेनेल्स कौन फंक्शन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे केमती डाइजेशन ऑफ द फूड और वेरियस मटेरियल टेक्स बाय phagocytosis or pinocytosis. तो डाइजेशन ऑफ पार्ट ऑफ द सेल बाय ऑटोफागी। तो ऑटोफागी माने कौन ऑटो होची कौन हमर सेल बा फागी माने होची ईटिंग। तो ब्रेक डाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बाय द रिलीज ऑफ एंजाइम इनटू द सराउंडिंग मीडियम। तो यही जगह तुम्हें देखो 3 प्रकार देखा देखो डाइजेस्टिंग फूड। तो फूड को प्रकार से डाइजेशन कला तापर तक डाइजेस्टिंग ऑफ कौन ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल को प्रकार से डाइजेशन करुच्ची आ गोटे डाइजेस्टिंग ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन को द्वारा लागिकिना तापर ताको केमती से डाइजेशन करुच्ची। तो बर्तमान आम देखा तार स्ट्रक्चर विषय। तो बेसिकली देखो लाइजोजोम रो जो स्ट्रक्चर अच्छी लाइक द साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स लाइजोजोम आर लाइकली सराउंडेड teeny bag filled by the dense material and the digestive enzyme. It consists of 2 parts गोटे होची limiting membrane आ गोटे होची inner dense mass. तो limiting membrane कौन this membrane is single unlike that of mitochondria and composed of the lipoprotein. तो बहुत important मन रखिता lipoprotein द्वारा तैयारी। The chemical structure is homologous with the unit membrane of the plasma lemma consist of the biomolecular layer as suggested by the Robertson. तो Robertson को suggest करथिले। सेमते inner dense mass कौन this enclosed mass by the solid or very dense content. Some lysosome have very dense outer zone and the less dense inner zone है। Some other जोड़ा अच्छे हम have cavity of vacuoles within the granule material. Usually they are supposed to
possess dense content that than mitochondria. तो ये देख तुम स्ट्रक्चर देखा पाच है तो ये प्रकार दुईटा स्ट्रक्चर को देखुच आम ताको सुइसाइडल बैग भी कहू नहीं कि तो देख नेक्स्ट देख परमिएबिलिटी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होची द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल to substrate of the enzyme content of lysosome. Certain substances called labialized cause instability of the lysosomal membrane leading to release of enzyme from the lysosome. Other substances called stabilizer have to stabilizing action on the membrane है तो किसी आम तो पढ़ा पर कौ प्रकार तुम अच्छी से लिस्टा को मुझे देदेवि है तो बेसिकली देख यहाँ हूँ देख फागोसाइट जो साइट आम देखा जदि तो फागोसाइट कौ प्रकार होची तार स्ट्रक्चरटा से दे देछि है तो ये देख कौ प्रकार तुम लाइसोसोम फॉर्मेशन होची तो ये किसी एंजाइम दरकार पड़े कौ कौ प्रकार एंजाइम प्रथम तो हूँ देख हाइड्रोलेज एक्टिंग ऑन ईस्टर बॉन्ड जो कि आम कौ कौ प्रकार एंजाइम देखुचे ये तो पूरा टोटाल स्क्रीन अच्छे तो मैं नोट कर कौ कौ प्रकार एंजाइम लगुच है तापर देख हाइड्रोलेज एक्शन ऑन ग्लाइकोसिल कंपाउंड तो ये एंजाइम गुड़ाक लगी थाए ताको मध्य स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तापर देख हाइड्रोलेज एक्टिंग ऑन द ईस्टर पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ लगी थाए तब देख 4 नंबर देखिए हाइड्रोलेज एक्टिंग ऑन अदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो 3 प्रकार देला एंजाइम रो ना तो देख 5 नंबर देखिए एसिड एनहाइड्राइड रे गोटे प्रकार एंजाइम लगिला तो 6 नंबर देख देछि जोटा पीएन बॉन्ड रे लगी थाए गोटे प्रकार से प्रकार एसएन बॉन्ड रे लगी गोटे प्रकार है तो एक तुम स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदेव तब देखो यार पॉलीमॉर्फिज्म कौन देखा द मोस्ट रिमार्केबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइसोसोम इज its polymorphism regarding its size and internal structure. According to the current interpretation, polymorphism is the result of primary lysosome which with the different material which are phagocytized by the cell. तब देखो at present 4 type of lysosome are recognized जोटा कि होची कोन which are only the first one is primary lysosome and the other 3 may be the group of secondary lysosome तो 2 प्रकार lysosome होची तो प्रथम lysosome टा होची हमर primary lysosome बाकी 3टा जाक जोटा रहिला सेटा होची हम secondary lysosome अंडर रे गला तो primary lysosome कोन देखो this is a small body whose enzymatic content is synthesized by the ribosome द्वारा synthesis होई थाए मन रखि थाओ तो from the enzyme penetrate via the endoplasmic reticulum to the Golgi complex in which the first acid phosphatase reaction takes place. The primary rhizome may be charged preferentially with one type of the enzyme. तापर यदि सेकेंडरी लाइसोसोम देखबा फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एसिड हाइड्रोलेज इज प्रेजेंट इन देम द सेकेंडरी लाइसोसोम आर द फॉलोइंग टाइप है तो को प्रकार गोटे हूँ देख हेट्रोफागोसोम जोटा डाइजेस्टिव वैक्यूल है तो बेसिकली एटा को प्रकार देख तो दिस रिजल्ट फ्रॉम द phagocytosis or pinocytosis or foreign material by the cell. The digestive vacuole contain positive phosphatase reaction. The negulfate material is progressively digested by the hydrolytic enzyme which have been incorporated into the lysosome.
सेमती आम जदि नेक्स्ट देखा अंडर आइडियल कंडीशन डाइजेशन लीड टू प्रोडक्ट ऑफ लो मोलिकुलर वेट which pass through the lysosomal membrane and are incorporated into the cell to be used again in many metabolic pathway. तब दुई रे देखा जदि रेसिडुअल बॉडी तो रेसिडुअल बॉडी कौन दिस इज द फॉर्म इफ द डाइजेशन इज इनकम्प्लीट जदि डाइजेशन इनकम्प्लीट है ताहले देखा जाए इन आमोएबा कि अदर प्रोटोजोन जदि आम देखा द रेसिडुअल बॉडी इज एलिमिनेटेड बाय डिफिकेशन द्वारा बॉडी रो सेटा एलिमिनेट कर दिया जाए. In other cell, they may remain for a long time within the cytoplasm as a lipofuscin granule है से प्रकार फॉर्म रे सेटा साइटोप्लाज्म भितर स्टोर होकर रही है. तो देखिए ऑटोफागिक वैक्यूल किंबा साइटोलाइजोजोम कौन देखा आम तो देख लाइजोजोम रेगुलारली एनगल्फ बीट्स ऑफ साइटोसोल which is degraded by a mechanism called माइक्रो ऑटोग्राफी है ऑटोफागी है ड्यूरिंग स्टार्वेशन द लिवर सेल शो न्यूमरस ऑटोफागिक वैक्यूल. दिस इज ए mechanism by which cell degrade its own constituent such as mitochondria and endoplasmic reticulum. तो तार फंक्शन कौन देख बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन फास्ट फंक्शन होची तार इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो विदिन द सेकेंडरी लाइसोसोम द इंजेस्टेड मटेरियल और दोज रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑटोफागी आर सब्जेक्टेड टू रिएक्शन द मेनी हाइड्रोलेज कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलेज टू मोनोसैकाराइड प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड. तो यही प्रकार से डाइजेशन करते तर ऑटोफागी कौन नेक्स्ट तार फंक्शन होचे ऑटोफागी. तो ऑटोफागी कौन सम लाइसोसोम ब्रिंग्स अबाउट द रिनोवेशन एंड द टर्न ओवर द सेल कंपोनेंट. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल becomes surrounded by the membrane of the smooth endoplasmic reticulum and lysosomal enzyme are discharged into the autophagal vacuoles and the organelle are digested है. तो देखिए ऑटोफागी is a mechanism by which less important cell component are broken down to facilitate survival. तो ये किसी बुझा नहीं जस्ट खाली कहानी परी देती तेणु मुझे तुमको बेसी किसी बुझौना है. तो 3 नंबर देखिए देखो रिमूवल ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो लाइसोसोमल ब्रिंग अबाउट शेडिंग ऑफ और रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू है अर्थात से टिश्यूटा को पुणी थे शेडिंग ऑफ अर्थात जमी आम जमी साप तार काति छड़ाए ये कौन होता है पुना टिश्यू को से तार छड़े से जगह रिमॉडलिंग कर नुआ टिश्यू तैयारी करे विथ द रिमूवल ऑफ होल सेल टोटल सेल को रिमूव करके एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस. 4 नंबर देखो देखिए रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम. The content of primary lysosome may be released into the extracellular medium by the process of exocytosis. तो ये कौन करे प्राइमरी लाइसोसोम ता भीतर थिबा जो कंटेंट गुडा को रिलीज करि थाए हैला जो प्रोसेस रिलीज करे ताको एक्सोसाइटोसिस बोली कहा जाए. दिस प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय पाराथायरॉयड हार्मोन एंड इनहिबिटेड बाय कैल्सिटोनिन. एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रही है. तो बेसिकली एटा कहा द्वारा होता है पाराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन द्वारा होता है तापर रिलीज ऑफ थायरॉयड हार्मोन को रिलीज कर भी हेल्प करे. तो जदि थायरॉयड हार्मोन अच्छे T3 टाइप कि T4 टाइप होता आर रिलीज फ्रॉम द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन स्टोर विदिन द थायरॉयड फॉलिकल है. तब देखो ल्यूकोसाइड ग्रान्यूल आर द लाइसोसोमल नेचर केमती all leukocyte of vertebrates contain granule which have many of the lysosomal enzyme. Monocyte have few lysosome but when they enter the tissue and the transfer into macrophage they gain lysosome. तापर नेक्स्ट देखा 7 नंबर अच्छे लाइसोसोम इम्पोर्टाट इन जर्म सेल एंड फर्टिलाइजेशन. तो ये लाइसोसोम इम्पोर्टान्स अच्छी केमती देख यहाँ आम अलरेडी प्लस 2 पढ़ी आसीचु कौन द एक्रोजोम ऑफ द स्पर्माटोजोआ
कैन बी कनसीडर एज द स्पेशलाइज्ड लाइजोजोम है थाए जो थी कौन जे व्हिच कंटेन प्रोटीएज एंड जोटा जे हाइरुलोनिडेज है एंड एबुडेंट एसिड फॉस्फेट तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जोटा हाइलुरोनिडेज कौन करे रिलीज हुए तार काम कौन है डिस्पर्स द सेल ऑफ द कुमुलस जोटा जे ऑर्फरस है एंड प्रोटेज डाइजेस्टेड जोना पेलुसिडा है कोटा जोना पेलुसिडा कहार अच्छी जोटा कि आमर ओभारी सॉरी एग रो बाहर आउटर कपटा जोना पेलुसिडा ताकू से डाइजेशन कर दे जहाँद्वारा कि स्पर्मटा कौन पेनिट्रेट कर भीतर को पशिवाई सुविधा होता है मेकिंग द चैनल थ्रू व्हिच स्पर्म न्यूक्लियस कौन पेनिट्रेट द एग in egg lysosome play an important role in digestion of the stored reserve है तो यहाँ बेसिकली लाइजोजोम आम टोटाल स्ट्रक्चर आउ फंक्शन विषय पढ़िले तो आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसो तो यूनिट 2 तो कंप्लीट है नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 पढ़ा से थैंक यू।